Hello to all the aspirants who are preparing for your competitive exam. This is Pradosh and I welcome you all to see Odisha, your very own channel. I'm RI ପାଇଁ जो exam ଅଛି ଆଗକୁ mock set discussion English ର right? So ତା ବିଷୟରେ without wasting any time, I'm welcoming all to this session and please inform to all those who are your friends जो मैंने RI English रे तुम्हारा doubt अछि. You want some practice now? We are giving it to you absolutely free on this channel. So let us start. Okay, question uda dekhiba. So give me a second please. Eight dekhantu question number 1 to 4. Ethi hame choose kare rache correctly and incorrectly spelled word. So what are the words given here? First is preposterous. Preposterous. So it is an adjective. So मन रखिथांतु पिले. It is an adjective. तार meaning कोन हबा? Absurd. A B S U R D. Absurd कि मार meaning हबा ridiculous. आपको जो हमें सेंटेंस रे यूज करिबा केमते लिखिबा एमती लिखिबा योर सजेशन इज preposterous. स्पेलिंग तार बिल्कुल ठीक अच्छे आम वर्ड को मास्टर कलो यस और नो. तो सेकंड वर्ड कौन दे डिजास्ट्रियस एटी स्पेलिंग भूल अच्छी DISASTROUS हम ये जो ईटा मझे रही जाए रंग. डिजास्ट्रियस मीनिंग कौन हम डिजास्टर रु डिजास्ट्रियस माने फेटल हम. ओके मैं लिखी द इन्वेजन. इन्वेजन माने कौन आक्रमण ऑन कश्मीर प्रूव्ड प्रमाणित हला टू बी डिजास्ट्रियस फॉर पाकिस्तान. पाकिस्तान पे डिजास्टर सब्यस्त है. तो अंडरस्टूड द मीनिंग. तो डिजास्टर आसो मर्डरस मीनिंग कौन हम किलिंग किलिंग सेंस आसो. ओनेरस ए वर्ड आम जाना ए सब तक वर्ड एंडिंग आप देखिए OUS अच्छी सर नो जो वर्ड एंडिंग OUS हम से सब गोटे एडजेक्टिव हम माने नाउन रे OUS लगे से एडजेक्टिव हम. देखो तो आम कह फेम FAME फेमस एडजेक्टिव है ना नहीं. एडवांटेज एडवांटेजियस मोमेंट मोमेंटस OUS लगे से एडजेक्टिव हम. तो एनीवे आम फोर्थ ऑप्शन वर्ड लिखा है ओनेरस. ओनेरस मीन्स विथ ग्रेट डिफिकल्टी मैंने गोटे काम जोटा करने बहुत किसी संघर्ष करा पड़े विच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट और डिफिकल्टी. ओके ताको कह कौन ओनेरस. चलो गोटे एग्जांपल देखा ओनेरस कौन एग्जांपल है हिमालय पर्वत चढ़ा बहुत एफर्ट दरकार ये सर नो. ताको मुझे सेंटेंस लिखी मुझे स्केलिंग. स्केलिंग माने कौन क्लाइंब करवा से बुझीपार द माइटी हिमालयस. आमे जेतर पर्यंत गोटे वर्ड को सेंटेंस रे यूज ना करि परिबा वी हैव नॉट रियली मास्टर्ड इट. जानि परछ पिले. तो स्केलिंग द माइटी हिमालयस इज एन ONEROUS ओनेरस चैलेंज. बुझी होची सेंटेंस रे आम एमती यूज करबा. आई होप यू हैव अंडरस्टूड क्लियर नो. So let's go to the next question. एठी लिखा है सेमते which word is incorrectly spelled. आगो आंसर टा कहि देबा cruelty. इज क्वेश्चन. सिवियरिटी माने कोन हार्ड. सिवियर रो सिवियरिटी. तबे सिंसियरिटी माने कोन जेन्युइननेस. सुपीरियरिटी माने जानि परछ तमरो एटा कोन सुपीरियरिटी. तो इट्स कॉमन वर्ड सुपीरियर रो सुपीरियरिटी. तो चलो सेंटेंस यूज करवा. ओके सिवियरिटी माने कोन तीव्रता एक्सट्रीम नेचर और हार्ड इंटेंसिटी सेंस रे वाटा हम यूज करवा. तो देखो द सिवियरिटी सेंटेंस रे केमि यूज करछ देखो पहिले एटा तुम जानि दियो. आंसर तो तुम जानि पालो सब बळे SAVERIT सिवियरिटी ऑफ द साइक्लोन वाज अनप्रेसिडेंटेड. माने साइक्लोन रो तीव्रताटा कहीं मत कल्पना करना था. अनप्रेसिडेंटेड रो मीनिंग एटी अनइमेजिनेबल ए सेंस रे आसपारिबो. ठीक सेमते वर्ड दे क्रुएलिटी तो तुम जानिछ. सिंसियरिटी सुपीरियरिटी आई थिंक यू नो दिस. ओके तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वर्ड. एटी सेम देखाइ छे. चलो सर इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कोन आसीबो एटी कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट एंड रिक्वायरमेंट. एटी मतलब सबुडा वर्ड ठीक अछि बदे. तो कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट इतरे डिफरेंस टा कहि दोचे. एडी वर्ड लिखा जे कॉम्प्लीमेंट और एडी वर्ड लिखा जे कोन कॉम्प्लीमेंट. सी द डिफरेंस हियर.
कॉम्प्लीमेंट माने which completes the meaning. और जदि PLI कॉम्प्लीमेंट मीनिंग है परिबो रिमार्क, रेस्पेक्ट, रिगार्ड ए सेंस रे वर्ड जाको यूज करि परिबो कॉम्प्लीमेंट. ओके, ही पेड रिच कॉम्प्लीमेंट टू द इंडियन टीम को भूरी भूरी प्रशंसा कला. बट मु कहबे दिस सेंटेंस इज मिसिंग ए कॉम्प्लीमेंट. आर मीनिंग कोन करबा सेंटेंस ए मीनिंग जानिया पे हम ओडे कॉम्प्लीमेंट दरकार. क्लियर हो गला ना नहीं. जदि हम ए जो सेकंड वर्ड अछि कॉम्प्लीमेंट दैट मींस PLI आको गोटे मु कहि परिबे लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट. एटा सब बेले मन रखि तो एटा गोटे इडियम टा रहइबो रूढ़ी सेंस रे. लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट माने क्रिटिसिज्म और इनडायरेक्ट क्रिटिसिज्म. क्लियर हो गला आंसर. सप्लीमेंट तुम जानि छ सप्लीमेंटरी एग्जाम में जानि छ 10th एग्जाम रे दिया जाए. रिक्वायरमेंट आल्सो वी नो द मीनिंग. क्लियर. एक्चुअली अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर डी हवा कथा तो दैट इज ए मिसप्रिंट हियर. ओके, सॉरी फॉर दैट. नेक्स्ट जेबा एटे वर्ड दे जे कोन चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड. आंसर आगे कहि दबा एमिलियोरेट. तो एटा गोटे वर्ब वर्ड हबो. स्पेलिंग AMELEO हबो एमिलियोरेट. ओके, एमिलियोरेट रो मीनिंग कोन आसीबो सब मन रखि तो आर मीनिंग हला टू लेसन द पेन. गोटे लोकर पेन किंबा सफरिंग को कमे दबा आको हमें कौन कहि परिबा एमिलियोरेट बोली कहि परिबा. आको सेंटेंस केम यूज हबो मु कहि परिबी देयर इज नोबडी टू एमिलियोरेट. स्पेलिंग टा देखि दियो. एडी आईटा मझरे रहला. आ थोड़ा लिखि दो जी. गिव मी अ सेकंड. देखो देयर इज नोबडी टू एमिलियोरेट. स्पेलिंग देखि दियो. द सफरिंग्स ऑफ द पुअर माने गरीब लोकर आखिरु लुह पोछि देवा पई केही नाहांती कमे देवा पई. सफरिंग्स ऑफ द पुअर व्हाट आम एमती यूज करिबा. क्लियर. नाउ नेक्स्ट जदि मु देखिबी एटी वर्ड कोन दे जेलट. ए जेलट वर्ड टा गोटे नाउन. आर मीनिंग हला एक्सट्रीमली पैशन और फैनेटिक. आको फैनेटिक कहि परिबा किंबा वेरी और एक्सट्रीमली पैशनेट. सेंस रे वर्ड यूज हबो. जेलट वर्ड टा प्रायतः नेगेटिव सेंस रे यूज हुए. ओके, मु कहबे द पाकिस्तान आर्मी जानि परछो इज लेड बाय ए जेलट. गोटे पागल फैनेटिक लोकटे कौन करछि पाकिस्तान आर्मी रो कमांडर हेकी अछि. इज द पॉइंट क्लियर. नेक्स्ट आर से पेनेट्रेट. एटा तुम जानि छ पेनेट्रेशन सेंस रे वर्ड हबो वर्ब टा स्टेन. स्टेन रे मीनिंग हला कोन गोटे स्पॉट दाग. नेगेटिव सेंस रे वर्ड यूज हबो आकु कहा जेबो ब्लेमिश. ओके, सेंटेंस सिंपली यूज हबो देयर इज ए स्टेन ऑन योर शर्ट. शर्ट ऊपर गोटे दागटे अछि. अंडरस्टूड. जेबा नेक्स्ट एटी लिखा है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. एटी करेक्टली स्पेल्ड कोड हबो एरोमेटिक हबो. सब वर्ड रे आईसी अछि. ऑलवेज रिमेंबर जो वर्ड एंडिंग टा आईसी हबो दैट इज एन एडजेक्टिव. जेमते कि साइंस रो साइंटिफिक, इकोनॉमी रो इकोनॉमिक. क्लियर हो गला. सो एरोमेटिक वर्ड टा कोड अछि ना एरोमा. वन सेकंड प्लीज. AROMA. एरोमा माने कोन होचे प्लेजेंट सेंट. ओके, तो एरोमेटिक को नेके हमें सेंटेंस करिबा. चलो एग्जांपल दबा. द फ्रेश फ्लावर्स ताजा फूल जो अछि आर एरोमेटिक. जानि पालो सेंटेंस टा हमें एमते यूज करि परिबा. ओरोबैटिक किछि वर्ड नै सेटा ऑटोमेटिक हे परिबो. अंटार्कटिक रो स्पेलिंग जानि छ. फोर्थ वर्ड डिस्कशन करिबा अल्ट्रुइस्टिक. एठी मन रखतो पिले गोटे रूट वर्ड अछि अल्टर. अल्टर मीनिंग हला अदर किंबा पर. तो अल्ट्रुइस्टिक रो मीनिंग हबो वन हु हेल्प्स अदर.
तो मुझे सब वर्ड गुड़ा कहूनी मीनिंग जो वर्ड मीनिंग तुम जानिछ नो नीड टू वेस्ट टाइम ऑन दैट जोटा तुमको दरकार पड़े सेटा कहि दो अल्ट्रुइस्टिक माने वन हु हेल्प्स अदर्स परोपकारी क्लियर हो गला सो एटा हम स्पेलिंग तार एटा यूजेस हबो आंसर हबो कोन ए एरोमेटिक क्लियर नेक्स्ट जेबा नेक्स्ट क्वेश्चन को दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 चूज द करेक्ट वर्ड मिसोजिनिस्ट मोमेंटरी मोनोथेइज्म मोराटोरियम ओके तो एठी कोन होचे ना फर्स्ट वर्ड मीनिंग कहि देबे मिस रो मीनिंग सब हबो नेगेटिव सेंस रे हेट सेंस रे जीवो ठीक अछि जी वाई एन जेन माने एटा सब वुमेन को जीवो तो मिसोजिनिस्ट रो मीनिंग हला वन हु हेट्स वुमेन जे वुमेन को हेट करे ताको कहा जीवो मिसोजिनिस्ट सेंदे मोमेंटरी वर्ड ता कोड आसे मोमेंट रो आसे एम ओ एम एम ए ओके गोटे मिनिट मोमेंटरी रो मीनिंग कोन हबो रिलेटेड टू मोमेंट मोमेंट माने कोन टाइम सेंस मोमेंटरी आसे मोनोथेइज्म जदि वो वर्ड ता कहबे एठी मोनो मीन्स वन और सिंगल थियो मीन्स गॉड और रिलीजन तो मोनोथेइज्म माने बिलीव इन वन गॉड हबो अर्थ मन रे देथांतु एठी वन गॉड और क्रिएटर ओवर देन फोर्थ वर्ड दे कोन मोराटोरियम तो एम ओ आर ए हबो एटा स्पेलिंग टी ओ आर आई यू मोराटोरियम रो मीनिंग हला नाउन डेटा टेम्पररी बैन किंबा एठी हम लिखि परिबा प्रोहिबिशन ऑन समथिंग आपको हम सेंटेंस यूज करबा जो सपोजिंग चाइनीज मोबाइल पर हम गोटे टेम्पररी बैन कर देछु तो सेंटेंस केम देबो देयर इज ए मोराटोरियम ऑन द सेल ऑफ चाइनीज मोबाइल इज द पॉइंट क्लियर इजी अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन को जबा एट लिखा है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड एटी फर्स्ट वर्ड हम असेसमेंट एटा करेक्ट हम रुडिमेंट स्पेलिंग भूल अच्छी रिट्रेंचमेंट ओके ईटा रही बेरीवमेंट ये तीन स्पेलिंग भूल अच्छी असेसमेंट स्पेलिंग करेक्ट अच्छे असेसमेंट मीनिंग कौन इभालुएशन और एग्जामिनेशन लिखिदे मुझे आर मीनिंग हो पार इभालुएशन किंबा ये लिखिपर असेसमेंट ए सरी कौन एग्जामिनेशन ना क्लियर इंटरनल असेसमेंट कहूँ ना नहीं सेमती लिखा है रुडिमेंट आर करेक्ट स्पेलिंग हम ईटा कटि आर मीनिंग होचे बेसिक किंबा आपको कहि परिबा एलिमेंटारी पॉइंट क्लियर मन रखे दो then they if I discuss option C retrenchment आर करेक्ट स्पेलिंग कौन हम R E T R E N C H ईटा कटि retrenchment आपको कह कॉस्ट कटिंग मेथड्स केमिति ना जदि प्रोजेक्ट नहीं आम आईटी पिला कौन करवा घरे था प्रोजेक्ट मिलले डाकबू चाकरी बाहर कर दो सालेरी दे पारियानी तो कॉस्ट कटिंग मेथड को रिट्रेंचमेंट करा बेरीवमेंट रो मीनिंग होचे लॉस किंबा डेथ आपको बेरीवमेंट कहबे जानि पालो तो करेक्ट आंसर एटी कोन हबो ऑप्शन ए हबो 7 क्वेश्चंस डन क्वेश्चन 8 को जेबा एटी सेम वर्ड कोन लिखि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड साइकियाट्रिस्ट ठीक अछि पंक्टिलियस ठीक अच्छे स्यूडोनिम ठीक अच्छे एक्चुअली इनकरेक्ट वर्ड हम एटा इनकरेक्ट वर्ड हो कौन परसुएंस आर मीनिंग टा परस्यू रु आछि PURSUE परस्यू रो मीनिंग आला फॉलो आपको जो नाउन फॉर्म करवा एटा PURSUANCE परसुएंस रो मीनिंग टा को हम कहि परिबा परसुइट कोड जिंस पछरे गोडाइबा ओके तो आपको जदि हम सेंटेंस रे यूज करबी म लिखबे द चीफ ऑब्जेक्टिव माने मुख्य उद्देश्य ऑफ टुडेस जनरेशन और टुडेस यूथ आजिकल लोक मानकर मुख्य ऑब्जेक्टिव कौन इज द ये लिखा हम PURSUANCE परसुएंस ऑफ
मनी पैसा पछरे गोड़ेबा ओके डोंट टेक इट लिटरली मोटे एग्जांपल माध्यम रे दोछि इज द पॉइंट क्लियर तो एटी हम साइकियाट्रिस्ट मीनिंग हम समस्त जानिछु पंक्टिलियस रे मीनिंग हला रिलेटेड टू बिहेवियर कंडक्ट टॉकिंग और स्पीच पंक्टिलियस पॉजिटिव सेंस रे वर्डटा जीव जानि पालो सुडोनिम रे मीनिंग कोन वेरी इजी ना सुडोनिम रे मीनिंग कोन निकनेम हमें जान जो जिंस क्लियर तो 8 नंबर क्वेश्चंस डन गिव मी अ सेकंड एडी के ही डैश गो देयर इन द इवनिंग फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट मॉडल वर्ब चलो फर्स्ट काटिबा फर्स्ट ऑप्शन देखिबा इन द इवनिंग जीव तो एडी फर्स्ट मु काटुची शल को कारण ही अछि इज द पॉइंट क्लियर तापरे काटुची शुड कारण शुड टा एडवाइस किबा सजेशन सेंस रे लागिबो इट इज नॉट द सेंस हियर एडी विल रहइबो वुड रहइबो तो एडी विल को चूज करिया ना वुड को चूज करिवा बोथ आर करेक्ट बट जदि मो पास्ट सेंस अनुसार जेबे मो वुड को सिलेक्ट करियो काहे के ना वुड डा पास्ट टेंस रे सबले गले पास्ट हैबिट और डिसकंटिन्यूड हैबिट सेंस रे लागिबो ए सेंस रे गले आमे कोन करिबा वुड को चूज करिया फ्यूचर सेंस रे जदि जेबा आमे विल को मते चूज कले भूल हो इज द पॉइंट क्लियर नेक्स्ट को जेबा दे डैश एक्सपेल्ड फ्रॉम द स्कूल फॉर मिसबिहेवियर एक्सपेल करि जेबा कथा मोर एडवाइस किबा सजेशन सेंस आछी एटा आंसर हबो शुड बी पॉइंट क्लियर नेक्स्ट यू डैश हरी एटा आंसर डी रे रही जाय छै एटा आंसर हबो कोन नीड नॉट हरी देयर इज प्लेंटी ऑफ टाइम पॉइंट क्लियर इजी क्वेश्चन एटा नेक्स्ट देखिबा he dash to pay you the loan he owes माने जो लोन तोर उधारे से पे करि दबा कथा एडवाइस सेंस यूज करलो ना नहीं तो एडवाइस सेंस रे वर्ड कोन लागेबो एटी लिखिबा ought to रो मीनिंग सबले मन रखिथ should सेंस रे लागिबो you should consult a doctor you ought to consult a doctor सेम मीनिंग आसो तो आंसर एटे कोन करिया ought to करिया 12 questions gone 13 when I was speaking to Rani over the phone suddenly we were cut off रे मीनिंग होजे गणा disconnect a call बहुत मीनिंग आसीबो disconnect a call cut off रे मीनिंग हला separate हे जिबा आरो बहुत मीनिंग अछि मो कहबे due to floods the village was cut off कोन जानि पाइला broke down भांगी जिबा stop working my car broke down run out रो मीनिंग कोन हबो सरी गला we have run out of milk एम सेंस रे वर्ड यूज कर पारिया hung up रो मीनिंग हला end a call after scolding me for 45 minutes he hung up फोन डा रखि देला गॉट द मीनिंग तो आंसर एटी कोन हबो डी करबा कट ऑफ करबा नेक्स्ट गिव मी अ सेकंड इट इज द फार्मर हैड डैश लैंड एंड मेनी सर्वेंट्स अच्छा देखो ये लैंड वर्ड टा काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल दिरा सही अछि ना नहीं आंसर एटी कोन चूज करबा बी सम लैंड करबा वेरी लिटिल कहले मीनिंग भूल हे जीवो हां ना नहीं वेरी लिटिल लैंड हले मेनी सर्वेंट्स कोन करिए मेनी थिले लैंड्स हवा कथा ये मध्ये कटि गला हमु प्रायोरिटी कोन दबार जे सम दबार अछि एंड लॉट ऑफ दबार अछि प्रायोरिटी कार रहइबो सम रो रहइबो तो सर सम मेनी एंड ए लॉट ऑफ ता भितर किछ डिफरेंस अछि की yes there is a difference between many some and a lot of I'll tell you okay but not today ठीक है homework करो I'll tell you in the next class sure okay the tribes lived dash customs different from anything the English had ever seen so the question here is जदि verb lived अछि ता पर phrasal verb कोन हबो by lived by ର meaning हला follow some rules and regulation custom ର meaning कोन tradition किछ रूल्स एंड रेगुलेशन आसियो ना नहीं तो आंसर हबे कोन लिव बाय सर लिव ऑन रो मीनिंग कोन हबो ना डिपेंड सेंस रे जानिबो मो कहबे द पीपल हियर लिव ऑन राइस माने राइस होची तांको स्टेपल फूड एमदे आसियो बाटा लिव ऑफ माने कोन जनक दया रे बंचिबा ओके नो चाइल्ड वांट्स टू लिव ऑफ हिज पेरेंट्स मनी कोन से पो ता बापा मां को पैसा रे बंचिया को चाहेनी पॉइंट क्लियर हे गला सेमते वर्ड আছে live with में जनक सहित I don't mind living with my parents I'm a joint family is the point clear जानि थियो समझते so 15 questions done right just 16 go
द क्रिमिनल टुगेदर विच इज एसोसिएट्स डैश अरेस्टेड देख पिले ये टुगेदर विथ अच्छी माने फर्स्ट सब्जेक्ट अनुसार भर्बटा हम सिंगुलर अच्छी आंसर करिया कौन वाज बी पॉइंट क्लियर गिव मी अ सेकंड 18 नंबर बाय द टाइम आई रीच अमेरिका इट डैश आंसर कौन हम वुड बी एटा टिके बुझाई देबी तुमको सब मन रखी तो जिते मु बाय द टाइम यूज करी बाय द टाइम संगे टू पॉसिबिलिटीज आर देयर पास्ट को रिफर कले V2 हैड प्लस V3 हो पार द्वितीय कौन हम ना V1 थिले वुड प्लस बी ना हैव प्लस V3 वुड हैव प्लस V3 ये दुटा कॉन्सेप्ट रहा एटा रहा पास्ट रे एटा रहा फ्यूचर जमते कि बाय द टाइम द पुलिस अराइव्ड ही हैड लेफ्ट पास्ट एंड हैड प्लस V3 रे पड़ेगा बाय द टाइम यू अराइव द मीटिंग विल हैव स्टार्टेड प्रेजेंट रो गले फ्यूचर परफेक्ट को पड़ेगा क्लियर एटा जेतो प्रेजेंट रे अछि हमें वुड बी ना कोन हम वुड हैव ए दुटा रो जहां भी आंसर करेक्ट हेता तो विल चूज ऑप्शन बी हियर क्लियर नेक्स्ट व्हेन ही गॉट मैरिड ही डैश ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टुक आउट माने गोटे पॉलिसी निज ना रे इश्यू कला टुक आउट रो मीनिंग एटी हबो गोटे मीनिंग हबो इश्यू ए पॉलिसी एटा पॉजिटिव सेंस रे आसला टुक आउट रो मीनिंग किल मध्ये होई पारे द इंडियन आर्मी टुक आउट 72 टेररिस्ट्स अर्थ बुझी पाइलो ना रिमेंबर देटा टुक अप माने एक्सेप्ट ए टास्क और ए चैलेंज ओके आर यू रेडी टू टेक अप द न्यू रेस्पॉन्सिबिलिटी ग्रहण करिया पे तू रेडी अच्छो कि एमती सेंस आसीबो टुक ओवर माने कोन चार्ज मो कहबी नरेंद्र मोदी हैज टेकन ओवर एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टुक इन रो मीनिंग कोन होबो लिसन विथ इंटरेस्ट कंसंट्रेशन रो सहित सुनिबा ओके आई एम ट्राइंग हार्ड टू टेक इन एवरीथिंग यू आर सेइंग जहां भी कहजो ताको इंटरेस्ट से सुनिया को चेष्टा करछ फॉर द मीनिंग प्लीज रिमेंबर देन आई विल गो टू नेक्स्ट इन द लास्ट फ्यू डेज डैश एनीबॉडी टू हेल्प हिम एडी इज हबो ना हैज हबो हम हैज दबा व्हाट इज द रीजन लास्ट फ्यू डेज हैज ए टाइम एक्सप्रेशन हो ना नहीं टाइम एक्सप्रेशन तेले हमें परफेक्ट टेंस को प्रायोरिटी दबा तो निटी कोन को हैज एनीथिंग बीन डन टू हेल्प हिम ऑप्शन डी हो डोंट लर्न द आंसर्स आल्सो लर्न्स द रूल well while picking a rose she dash her hand on a throne एटे कोन हबो स्टंग हबो कि स्टंग माने कोन लागिबो बी मोह माछि थिले स्टिंग रु स्टंग हेतांदा आकु काटिबा एटे कोन हबो डैमेज तो हबोनी आना कोन हबो एटी स्क्रैच नले कट आमे एटी स्क्रैच वाट को दबा कट माने नाइफ थिले कट हेतांदा एटी आंसर हबो कोन स्क्रैच्ड कोनटाटे अछि पूरा नेक्स्ट जवाब अच्छा ये 21 24 जम्बल्ड वर्ड आमे लॉजिक जानिछु नाउन प्रोनाउन वर्ब को देखिबा देखो ये फर्स्ट वर्ड कोन जे सुपरस्टिशन एडी कोन लिखा अछि द सपोज्ड पावर 5 ऑन एटा वर्ब दा मन रखितो तापरे ऑफ ड्रीम दा प्रीपोजिशन फोरटेल द फ्यूचर तो सब्जेक्ट पाखरे कोन हो फर्स्ट वर्ब आसीबा कथा एडी आंसर कोन करिया सुपरस्टिशन डैश एंड पर ओटा नाउन थिबो नाउन दा कोन मैजिकल प्रैक्टिसेस तो सुपरस्टिशन देखो एडी कोन एंड ऑफ एका संगे लागिबो कि हबनी तेना सुपरस्टिशन एंड मैजिकल प्रैक्टिसेस तापरे वर्ब कोन हबो थ्राइव ऑन व्हाट लिखा हबो द सपोज्ड पावर ऑफ ड्रीम्स टू फोरटेल द फ्यूचर पॉइंट इज क्लियर ना टिके नाउन वर्ब प्रीपोजिशन को अरेंज करले कांसेप्ट क्लियर हे जिवो तो आंसर एडी कोन करबा डी को चूज करबा इज इट क्लियर आराम से then let us go to the next question 1 second please एडी लिखा है जे देखो एडी द स्ट्रॉन्गर एडजेक्टिव अछि एडजेक्टिव पर कोन हबो गोटे नाउन आसीबो सब बळे मन रखि द द फॉस्फर एडा नाउन दा द मोर लाइट एडी ऑफ ता माने प्रीपोजिशन द बीम गिव्स आउट तो देखिबो एडी दीटा कंपैरेटिव डिग्री अछि जेंते कि द हायर यू गो द कूलर इट गेट्स सिंपल लॉजिक ना तो हमें कौन करिबा हमें एमिति देखिबा जे एडजेक्टिव प्लस नाउन एमिति कांसेप्ट कले हे जिवो तो आंसर कौन करिया द स्ट्रॉन्गर द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एडा ओडा लॉजिक हे परिबा तापरे द मोर लाइट कौन लिखिबा द फॉस्फर
gives out इजी क्वेश्चन हला आउथरे कहि दो जे the stronger the beam of electrons एटा गोटे हे गला the plus adjective सेकंड होचे the more light the phosphor gives out माने इलेक्ट्रॉन र बीम पे जते स्ट्रॉंगर हबो फॉस्फोर ता सेते लाइट दबो एटा कोड लिखाइ जिवो ऑप्शन सी को चूज करिवा इजी देन जेबा नेक्स्ट को 1 सेकंड प्लीज देन दे there are thousands of us former school and college friends by some of our at the careers chosen who were surprised and their success in these fields first logic मन रखि तो एडी हु टा गोटे सबले गोटे नाउन पाखे लागिबो ना नै तो हु टा एडी काहा पाखे लागिबो आइदर अज पाखे लागि पारे यस और नो तो हम लिखि परिबा there are thousands of us के former school and college friends एटा रहिला तापर कोन हबो देखिबा आंसर कोन हो जे 1 सेकंड आउथरे करबा एटा there are thousands of us ओके तापर हम एटी हुटा लिखि देले मते एटी चलिबो who are surprised बगैर प्रीपोजिशन at लागिबो at the career chosen by परे नाउन आसीबो some of our former school and college friends and their success in these fields तो ऑप्शन एटा ए करिबा क्लियर देन जेबा 24 नंबर आंसर कोन अछि ना देखो द इंटरनेट हैज गिवन एडी टू माने कोन टू केटा वर्ब रहला एडी एंड इवन अलाउड मार्क करो वर्ड जाको स्टूडेंट एक्सेस लिखाइ जे मेड इट चीपर टू अटेंड यूनिवर्सिटीज रिमोटली तो करेक्ट आंसर कोन होबो एडी ना फर्स्ट लिखिबा द इंटरनेट हैज गिवन व्हाट किंबा काहा को देइची तो आंसर एडी कोन होबो ना लेट अस गो विथ द इंटरनेट हैज गिवन काहा को हम आंसर लिखिबा स्टूडेंट्स मान को देइची कौन देइची एक्सेस टू रीम्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट मींस हम ऑप्शन बी को देखिबा बी और ए भीतर देखो द इंटरनेट हैज गिवन स्टूडेंट एक्सेस टू रीम ऑफ इंफॉर्मेशन सेकंड कॉमा रहबा कोन मेड इट चीपर टू कीप इन टच विथ फ्रेंड्स एंड इवन अलाउड देम टू अटेंड यूनिवर्सिटीज रिमोटली तो इंटरनेट टा स्टूडेंट्स मान को कौन देइची से अनुसार आंसर देइची तो ऑप्शन बी हबो टोटली क्लियर नेक्स्ट को जेबा एटले खाइ छी एक्टिव रे पासिव पर इट इज टाइम टू टेक टी तो सबले मन रखिबार स्ट्रक्चर कोन अछि इट इज टाइम आरंभ होला परे तम सबले लिखिबा एटी फॉर परे आसीबा ऑब्जेक्ट तापरे टू प्लस बी प्लस v3 फॉर्म एटा हो द फार्मूला तो आंसर कोन हो इट इज टाइम फॉर टी टू बी टेकन ऑप्शन बी क्लियर नेक्स्ट को जेबा द मेंबर शुड एडहर टू ऑल द डिसीजन देखो सब्जेक्ट है मेंबर verb होजे कोन should adhere to what all the decisions रो आगु आसीबो all the decisions should plus to by the members option C करिवा clear now next को जेबा लिखाइ छै कोन his subordinate subject accused okay him कोन of various offenses he was accused of various offenses by his subordinate option D करिवा clear next को जेबा the cat sat on the window sill ए वाटा अंडरलाइन हे छै तो ए वाटा कोन हबो हमरो द छै माने एटा ओडे नाउन हबो clear next देखिबा the river flowed gently through the picturesque valley एडी वाटा हे छै picturesque आंसर हबो adjective एटा valley को डिस्क्राइब करछु next hop on my back and I will take you across एडी across वाटा कोन हबो ना across वाटा एडी either adverb ना हेले preposition हबो तो आंसर में एडी preposition चूज करिया because adverb is not there clear next जवाब I have dashed Lakshmi for the past 12 years have पर भीतर फॉर्म आसीबो आंसर करिबो known clear अब नेक्स्ट जेबा he did not qualify पर ऑप्शन लागिबो सबले for the job जदि हम नेक्स्ट को जेबा dash the last 10 years जेहेतु गोटे टाइम पीरियड को बुझेला आंसर हबो बी for over
Next, the strike has been called off. Called off meaning hella cancelled. We know this, it is easy. Then 35, he is always angry. Angry pakare with lagibo kaiki na eti living person achandi children. Clear? Jodi living na thanda angry at lagi thanda. Next को देखिबा एटा पैसेज जोड़े देछि देखो कोन से पैसेज रे पढि दबा ए स्ट्रे रिसेंट इन्वेस्टिगेशन बाय साइंटिस्ट माने एटा हमर इन्वेस्टिगेशन विषय रे कहू के करथिले साइंटिस्ट माने करथिले शोज दैट रो मीनिंग हला इन्वेस्टिगेशन रो रिजल्ट को एक्सप्लेन करछि कोन से डाटा ना स्ट्रेंज एनिमल बिहेवियर एनिमल माने को बिहेवियर को देखिए कहूछि माइट हेल्प प्रेडिक्ट अर्थक्वेक माने एनिमल बिहेवियर द्वारा आमे केमिति अर्थक्वेक प्रेडिक्ट करि परिबा या ऊपर गोटे इन्वेस्टिगेशन गोटा साइंटिस्ट माने करथिले दैट इज द मेन आइडिया क्लियर तापर कोन लिखा छै इन्वेस्टिगेटर्स फाउंड सच अकरेंसेस माने कोन इवेंट्स इन ए 10 किलोमीटर रेडियस ऑफ द एपिसेंटर ऑफ ए रिसेंट क्वेक एपिसेंटर माने अर्थक्वेक टा जो जगह तार सेंटर पॉइंट रो स्टार्ट हेतिला बुझि पालो तो एटा कोन कहला जे ए इन्वेस्टिगेशन करिसंते काहेकि ना इन्वेस्टिगेटर माने ए भलिया किछि घटना रिसेंट जो अर्थक्वेक हेतले सेठी देखिचंती तो घटना गुड़ा कौन ताकू किसी एलाबोरेशन दरकार तो डाटा गुड़ा देछि सम बर्ड्स स्क्रीच्ड माने जोर चें चें कले एंड फ्लू अबाउट वाइल्डली देखो स्ट्रेंज बिहेवियर डॉग्स येल्प्ड माने कौन भुकिले गोटे स्ट्रेंज मैनर रे एंड रैन अनकंट्रोलेबली तो इमिति बिहेवियर अर्थक्वेक संगे काई करछंती आर लिंक कौन याको ने कि रिपोर्ट करछंती साइंटिस्ट बिलीव करछंती जे एनिमल्स कैन perceive माने जानी पारिबे अंडरस्टैंड these environmental changes as early as several days before the mishap meaning हला कोन एटी क्वेक हबो एक्सीडेंट हबो नेचुरल कैलामिटी हबो तो ए घटना को देखि साइंटिस्ट माने निष्पत्ति दे चंदी जे मते लागो जे एनिमल माने ताका बिहेवियर आगुरु कोन हबो प्रेडिक्ट कर दे पारंती सेम दे इन 1976 आफ्टर ऑब्जर्विंग एनिमल बिहेवियर चाइनीज माने कोन करथिले वर एबल टू प्रेडिक्ट इन अर्थक्वेक although hundreds and thousands of people were killed the government was able to evacuate mane rescue kari parla millions of others and thus keep the death toll at a lower level तो पैसेज रे जितले बुझिया पे सहज है एनिमल बिहेवियर अर्थक्वेक चाइनीज माने केमते कले आर डाटा ऊपर ने कि से एलाबोरेट करछि तो चला एटी पढिबा फर्स्ट क्वेश्चन देछि कोन एटी देखो if scientists can accurately predict earthquake there will be कोन हबो कंक्लूजन देखो डेथ टोल को देछि माने लोअर डेथ रेट पॉइंट क्लियर सबल ऑप्शन जक पढी की कहबो व्हाट प्रेडिक्शन कैन बी मेड बाय ऑब्जर्विंग एनिमल बिहेवियर ना इट आंसर हबो अर्थक्वेक कन लिखाइ छै एटी एपिसेंटर बोली जानि पालो 3 नंबर क्वेश्चन को देखिबा 38 हाउ कैन एनिमल परसीव दिस चेंजेस व्हेन ह्यूमन बीइंग्स कैनॉट काहे ना सेमाना पाकर स्ट्रेंज बिहेवियर दे जना नै बिहेवियर मीनिंग हला ताकर नेचुरल इंस्टिंक्ट सहित बिहेवियर लिंक अछि ना नहीं तो आंसर रेडी करबा बी नाउ नेक्स्ट को जेबा 8 लिखाइ छै व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू सी अब चाइनीज फेल्ड लिखाइ छै कि चाइनीज आर एबल टू लिखाइ छै क्लियर तापर हम जेबा नेक्स्ट को लिखाइ छै इन दिस पैसेज इवैक्यूएट रो मीनिंग कोन remove habo remove माने कोन जन को रेस्क्यू करबा आंसर ए करबा फ्रॉम द ऑप्शंस ओके so this is all about your session hope you have enjoyed it so keep with us okay share like and subscribe to our channel and spread the good news to each and everyone and stay updated with your preparation good luck and more power to all of you apna man sangare next dekhabo with a brand new session okay